Hello dear students, today we will read poem 1 of class 4th, that is trees are the kindest things I know. Students, this poem is based on importance of tree and this poem will tell us importance of tree and how trees are important for us. So, poet of this poem is Harry Ben. He is an American poet. Come on and let me know what poet wants to tell us. Okay, now we will start our poem. Trees are the kindest things I know. They do no harm. They simply grow. ट्रीज जो होते हैं वो उनका नेचर काफ़ी काइंड होता है, वो किसी को भी हार्म नहीं करते और सिंपली ग्रो करते हैं. And spread a shed for sleepy cows and gather birds among the boughs. Boughs means होता है main branches of tree. Branches of tree. Okay. Next stanza is they are the first when days begin to touch the beams of morning sun. Beams of morning sun होता है जो सुबह का सन की जो रोशनी होती है वो सबसे पहले किस पे टच करती है? ट्री पे. They are the last to hold the light when evening changes into night. वो ट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे कि जो इवनिंग की जो लास्ट रोशनी है वो ट्री पे ही ख़त्म होती है और इवनिंग चेंज हो जाती है किसमें? नाइट में. So our next stanza is and when a moon float in the sky they hum a drowsy lullaby of sleeping children long ago. Trees are the kindest things I know. Last line is the repetition of first line. Okay. So, poet wants to tell us कि जो ट्रीज की जो ब्रांचेस होती हैं जब मून आ जाता है स्काई में तो उसकी ब्रांचों की आवाज़ ऐसी होती है जैसे कि वो लोरी सुना रही है. लल्लाबाई मीन्स होता है लोरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लोरी, जिसको सुन के बच्चे काफ़ी देर तक सोए रहते हैं. So, this was our poem, students. Hope you understood. And from this poem, we learned trees gives us so many things unconditional. Students, hope you understood this poem and you have to learn this poem. Okay? Thank you, students.